Hi friends, how are you? Welcome you to the discussion session of the second online test. आशा करुच्ची टेस्ट ठीक ठाक जाइथियो regarding chemistry paper. Paper was on easier side and question basically from photoelectric effect and your gas laws and that gas laws mainly on the basics also. So hope semester exam as per the expectation jaithibo and it's quite possible to make 10 correct out of the 10. Okay, let's start question discussion one by one. Now the question number for one. देखिबा question number one ने कौन पचारिछि? What is the concept? How does the intensity of light affect the photoelectric current? The simple the concept is the relationship between intensity and your current. Just remember, हम बहुत थोड़ा डिस्कशन करथिले. गोटे होची your frequency, next is your intensity. यदि intensity बढ़िला, if intensity increases, then the number of photon will increases. Okay, each photon will strike with one electron each. So the number of photoelectron will increases. Okay, then number of photoelectron increases हेले कौन हबो ना करंट इंक्रीज हबो. एया थिला तो कांसेप्ट. जदि तमे इंटेंसिटी की बढ़ाइबो, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ी बढ़ी चलिबो, सब फोटोन गुडा विल स्ट्राइक विथ वन इलेक्ट्रॉन, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल इंक्रीजेस, दैट विल इंक्रीज योर फोटो करंट. किंतु जदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाइबा, दैट विल स्ट्राइक विथ द पर्टिकुलर फोटोन, दैट फोटोन एनर्जी विल इंक्रीजेस, the kinetic energy will increases, the stopping potential will increases. एतिकी थिला कोन होची कांसेप्ट. इंटेंसिटी रे कोन हबो, फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो फ्रीक्वेंसी रे कोन हबो. से सेया पचारची आज इंटेंसिटी इंक्रीजेस तो कोन फोटो करंट इंक्रीजेस हबा कथा. फोटो करंट ठीक अछि, एतिकी एक्सप्लेन हेई जाउची. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजेस. आंसर इज ए. ओके ना, लेट्स go to the question number 2 for you. It is the question number 2. Again some conceptual questions. एठी से कौन पचारची देखनी. If the photoelectric emission could be explained by the, ये जो हम photoelectric effect पढ़िले, फर्स्ट कांसेप्ट हम क्लियर कले. photoelectric effect कौन पई आसिला ना, photoelectric effect बेसिकली कौन पई आसिला, इट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. लाइट रो वेव नेचर was justified, but first time it explained the particle nature of the light. Einstein photoelectric equation explained the particle nature of the light. Just a theoretical and fact based question and you know all. Okay, question number 2 आशा करछि समिस्टर ठीक थिबो. Next go to the question number 3 for you. It is the question number 3. Typically photoelectric effect रो गोटे कोन होची न्यूमेरिकल्स. जो न्यूमेरिकल्स हम बहुत थर करिच. देखो आसो अप्रोच करिया. तो वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम कोन देई देइची ना, वर्क फंक्शन सर देई देइची. वर्क फंक्शन इज गिविंग 2.5 electron volt. The maximum wavelength of light that can cause photoelectric emission. What will be the wavelength? Simple पचारची, what will be the correspondence wavelength? कौन कही जेदी एभी अच्छी आ आंसर कोथि अच्छी एंगस्ट्रॉम अच्छी, नानोमीटर अच्छी, देन डोंट गो ऑन इन द कन्वेंशनल वे. इक्वल टू एसी बाय लैम्बडा एच न्यू ताकू पके न करिया अपेक्षा मने पका कौन कही ना, एया कही E equal to approximately 1240 divided by lambda, and the lambda will be nanometer, that E will be your electron volt. So it has been asked lambda will be your sir 1240 divided by E in electron volt. Okay, 1240 divided by E. E kete? E is given 2.5 and the lambda will come in nanometer. Then multiply with the 10, then the answer will come in approximately in angstrom. The answer will come approximately this much. Okay, तेणु कौन पकेबो 1240 divided by E पकेबो आ यूनिट टिके टेक केयर करिवो. यूनिट टेक केयर न कले बहुत पिलांकर ए क्वेश्चन भूल हेइतो. बेसिकली कौन पई ना, यूनिट टेक केयर कर नथियो बोली. आ नल किछि नु, यूनिट टेक केयर कर नथिबो. आ E equal to SC by lambda, E equal to HF जोटा जिबा हाँ हेई परिवो. यूनिट कन्वर्सन विल बी कॉम्प्लेक्स. तेणु एई वे रे करिवो आ आंसर मैच करिवो आ होप हेइथिबो बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3.
Now let's go to the question number 4. It's the question number 4 for you. এটি কোন পচালা? Another typical and expected numerical. কারণ photoelectric effect রে ଆମେ এগুলা expect କରି परिबा. The kinetic energy of photoelectron, kinetic energy ଦେଇ ଦେଇଛି on shining of wavelength ଦେଇ ଦେଇଛି. Kinetic energy ପଚାରିଛି ବୋଧେ. wavelength କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି ନା 6.2 into 10 to the power minus 6 meter. Okay. On a metal surface of work function भी ଦେଇ ଦେଇଛି. କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି? 0.1 electron volt. মনে পকা যদি কাইনেটিক এনার্জি ওয়ার্ক ফাংশন তাଙ୍କ ভিতর রিলেশন কোন বেসিক্যালি আইনস্টাইন ফটোইলেক্ট্রিক ইকুয়েশন না দেন ফার্স্ট রাইট ডাউন দ্য বেসিক্স অফ দ্য আইনস্টাইন ফটোইলেক্ট্রিক ইকুয়েশন the basics equation is like this. Energy of photon will be diverted to your work function plus kinetic energy. You have done number of problem on this. It has asked your kinetic energy, then the kinetic energy equal to energy of photon minus work function. Sir, work function is given, s work function is given, so unknown is na sir energy of the photon. Energy is not given but its wavelength is given, so from wavelength we can calculate energy. How it is calculated? Na E equal to 1240 divided by lambda. कहब सर यही फर्मुला. हाँ एगेन फर्मुला अप्लाई करी कारण इभी रे अच्छी ऑलरेडी किंतु लैम्ब्डा गुटे देखनी कोउतरे अछि ना इट इज मीटर 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. सो लैम्ब्डा विल बी 6.2 into 10 to the power 6 into 10 to the power 9 नानोमीटर. जेदी प्रोब्लेम रे टच नथिबो ए यूनिट कन्वर्सन गुडा समिस्टर भूल हेइतिबो. प्रोब्लेम तुम करि पारथो यूनिट कन्वर्सन ने फसुतिबो. ता लैम्ब्डा बाहरी गला नानोमीटर. Put the value of lambda, then find the E, then put the E. Work function is given 0.2 and that E will be found out around 0.2. That minus 0.1 is your work function. The answer will be approximately 0.1 electron volt. Got it? Same. Write down the equation first. Equation is energy equal to total energy equal to work function plus kinetic energy. Your kinetic energy has been asked. So kinetic energy equal to total energy minus the work function. Total energy is not given but the wavelength is given. From the wavelength calculate the total energy by 1240 divided by lambda, but take care of the unit first. Then sir work function is given. How much? 0.1 work function is given. So from the total energy subtract the work function, then we'll get the kinetic energy. Okay, now let's go to the question number 5. It's the question number 5 for you. Simple, it will test your concept, nothing else. It will test your concept. भाबुच ग्राफ देखिए बहुत बड़ जिनस किछि ना. For the photoelectric effect in sodium, the figure shows the cutoff voltage versus frequency. The threshold frequency. किछि यदि न बुझुतिबो तमे threshold frequency पचारछि ना. Threshold frequency रे definition मन पकान. ना सर the minimum frequency which is required to start the photoelectric emission. The minimum frequency which can start the photoelectric emission. ताल देखिलो ना ग्राफ रो एउट photoelectric emission start हेछि कि ना सर दिस पॉइंट रे photoelectric emission start हेछि. तेणु सेई फ्रिक्वेन्सी टा पाया पाई तुमको जो वोल्टेज अप्लाई करिछ सेई फ्रिक्वेन्सी टा केते अछि से फ्रिक्वेन्सी पचारछ आ किछि पचारनी. दैट फ्रिक्वेन्सी इज यूनिट 3 तळे देखनी फ्रिक्वेन्सी इन 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. सिंपल आंसर इज 3 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. कोन एठी कांसेप्ट देखो एउटो स्टार्ट हेइनी किछि समय परे तमर वर्क फंक्शन क्रॉस कला परे तमर स्टार्ट हैला एउटो करंट स्टार्ट हैला. तेणु सेति की फ्रिक्वेन्सी जाईछि कोउथरे ना तमर वर्क फंक्शन को कोन करिया पाई कंपनसेट करिया पाई वर्क फंक्शन को बैलेंस करिया पाई. तेणु एउटो स्टार्ट होउछि तेणु सेटा हाइगला तमर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. एइटो क्वेश्चन पचारि परथांदा वर्क फंक्शन केते पचारि परथांदा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी पचारला वर्क फंक्शन पचारि परथांदा आराम से क्लियर हैला. तेणु ग्राफ को देखि न दरिके जदि ठीक से अप्रोच करथिबो काम एंड पुल थिबो एग्जाम रे आराम से करि परथांदा क्वेश्चन टा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 for you. It is basically related to your gaseous state question but basic questions. It will test your mole fraction concept. Mole fraction mone paduchi mole fraction. Anything fraction that means two things: individual mole divided by total mole. Okay, कौन अच्छी? It is given CH4 and O2. So we have to calculate the total mole and we have to calculate the mole of the oxygen. काहेकि ना mole fraction of oxygen पचारछि. कहो सर मोल देइन वेट देइन किंतु आ गोटे दादा इक्वल वेट देछि ना.
So let x gram CH4, x gram O2. Then before mole fraction, we have to find the mole, then the mole fraction. So moles of CH4 equal to x divided by molecular weight 16. Moles of O2 equal to x divided by molecular weight 32. कब सर x रहिलानी फ्रैक्शन अछि काई टेंशन नउजो x कटिबा आपा आपे. सो कोन पचारछि ना मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंडिविजुअल मोल x by 32 divided by total mole x by 32 plus x by 16. x कॉमन नहीं जाना कटि जीवन आराम से कटि जीव. क्लियर हो गला. एबे कैलकुलेशन करके देखो आराम से आसी जीव केते ना 1/3 आसी जीव. x ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି equal weight ଦେଇଛି that x this also x then converted weight to mole then calculate the individual mole by total mole. ଯଦି CH4 ପଚାରିଥାନ୍ତା ସେଭଳିଆ x by 16 divided by x by 32 plus x by 16 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା. ହେଇଯିବ ଏବେ ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ. ସେ ଯଦି ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରେସର ଇନଟୁ ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ କରିଦେଇଥାନ୍ତା. ଡାଲ୍ଟନ୍ସ ଲ ଅଫ ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା. then next question number 7. 7 fact based question पचाला किंतु एटा बारंबार repeatedly you will use it. The value of r value universal gas constant r value different value होई परिवो according to the problem it will be changed. It can be 0.082 if it is in liter atmosphere, then same things. It can be 8.314 if it is in joule. It can be your around approximately 2 calorie in calorie. एटा कोउठरे ना जदि एटमॉस्फेयर लीटर रे देइथला पकेइबो. एटा केते ना मेकानिकल रे जदि देइथला पचकरिबो. हला जदि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देला पास्कल देला आर जो नॉर्मल एसआई यूनिट रे देइथला तमे एथिरे पकेइबो. क्लियर वॉल्यूम मीटर क्यू रे देइथबो जदि एटा केते ना कैलोरी यूनिट रे पचारथिले पकेइबो. कबो सर तीनटा अंक दरकार हो तीनटा अंक तमर दरकार हो. नॉर्मली केमिस्ट्री रे तमे एटा यूज करिवो. फिजिक्स रे थर्मोडायनामिक्स आसिले एटा यूज करी 8.344. क्लियर है. नेक्स्ट तुम कौन होगा ना थर्मोडायनामिक्स केमिकल थर्मोडायनामिक्स रे बहुत समय ए 2 कैलोरी टा यूज हो. तेणु तुम बेसिकली तीनटा अंक यूज हो. गैसियस स्टेट रे 0.0282 मैक्सिमम यूज हो. 8.314 कोथरे यूज हो. नॉर्मली फिजिक्स रे यूज हो. 2 कैलोरी तुम कोथरे यूज हो. जदि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आसला फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो जदि पचारथिबो कैलोरी ताले 2 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली यूज हो. अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी. ओके देन द आंसर इज योर सी. ओके आ तीनटा को मन रखा पड़ो 0.082 8.314 2 and unit is different. Okay, next question number 8 for you. Question number 8 कौन दे देखिया. If pressure is increased by 2 times for a gas keeping all other facts constant density विषय पचार किछि यदि न भाबियो मने जदि पड़ियो मने पकानी रो इक्वल टू डेरिवेशन ऑलरेडी करिच खाता रे जानिच pm by rt करिना density equal to pm by rt. Apply this formula, get the answer. All things remains constant. The pressure is increased by 2 times. If the pressure is increased by 2 times, then density is directly proportional to pressure. Then density will be increased by 2 times. Okay. से सिंपल पचार खाली यही फॉर्मूला टा strike करिवा दरकार माइंड कि density equal to pm by rt. If the pressure is increased by 2 times for a gas all other factor constant, then will increase by 2 times, density will be increased by 2 times. Okay, next question number 9 for you. Question number 9 again a fact based question, conceptual based question. कौन पचारला. What is the absolute zero as per Charles law? Charles law tells that V is directly proportional to T at constant mass and constant pressure. Okay. And V1 by T1 equal to V2 by T2. Again and again I am telling that T should be in Kelvin. The volume will be 0 if temperature will be 0. But not at 0 degree centigrade. तो हम फ्रिज रे कौन वॉल्यूम 0 हो जाउची ना 0 degree centigrade नो. It is 0 Kelvin. That is minus 273 degree centigrade. And minus 273 degree centigrade is known as your, or 0 Kelvin is known as your absolute zero. That absolute zero is equal to minus 273 degree centigrade or 0 Kelvin, not 0 degree centigrade. से इतने confusion हुए. It is 0 Kelvin. Okay. Now the last question.
It is the last question. Again, somewhat from the photoelectric effect, and we have already discussed. If the frequency of the incident photon increases, frequency increase color. Just remember the concept frequency increase. Then kinetic energy increase. Okay. Which increase? Na kinetic energy increase. If the kinetic energy will increase, stopping potential concept जदि आमे मने पकेइबा, if the kinetic energy increase, then more negative potential will require to stop that electron. That means that stopping potential will increase. Okay, then the stopping potential will increase. कौन पचारे? Then stopping potential increase, kinetic energy increase है. Car kinetic, if the frequency increase, then the frequency will increase, the electron will move with more velocity, more kinetic energy, then more stopping potential, negative potential will require to stop that electron. That means stopping potential increases. ठीक है? 10 out of 10. Hope कि 10 out of 10 थिबो. And more important things, that number does not matter. These 10 questions should be clear by the end of the day. That's matter. Number does not matter. Okay, thank you. Meet you soon.